Hello friends, this is your not so fit tuber Rahul. Actually, I am facing some health problems because of sore throat and cough, and even I am sneezing today. I was not able to go to gym, so I thought maybe I should make a video for you guys to help you get some understanding of your routine system and also understand that sometimes it's better to let things go for a while and not to feel bad about something. Friends, I am into this fitness journey for about 4 years. I am resorting to healthy practices, and that's why I started this channel to promote healthy practices. I was little disappointed since last 2 days because I was not able to spare time for gym. My office hours were hectic, my health was not good. I was little tensed how my recording and editing will go on my channel because I am getting short of time. यही सब सोचते हुए I tried to get some wisdom. I thought a little about it. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि it's the time when we are really close to New Year resolutions. There are lot many people जो अभी जिम ज्वाइन करने जाएंगे. ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा we will set a New Year target, especially at a time when we are facing a second wave throughout the world. तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं थोड़ा टाइम निकाल के, which might help you understand that what actually is the thing which yields us to some good results. Friends, I want to talk about something which is very core to anything, not just the gymming, but since it is very important in with reference to gym, I just felt like to bring it into discussion. आप मेरे जैसे कितने लोग होते हैं जो कुछ दिनों के लिए काफ़ी सीरियस फील करते हैं to start the gym workout, and after few days we find out that we are not serious enough or we are not doing enough according to our goals. So this is something which I want to discuss with you in little depth, with discussion on how our brain works regarding working towards our goals. कुछ दिनों पहले I was into a seminar and I learned about how our brain works towards our goals, how our brain got developed from the evolutionary point, and how all those things can be linked to our gymming routine which we want to include into our routine. Friends, इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है about how our behavior towards our goals changes and what are the ways the results can arrive to us, how we can be consistent. काफ़ी यूट्यूब गुरुज हैं जिन्होंने इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है कि your workout, your diet, obviously they will give you results, but at the end of the day what you actually need first of all is consistency. So today I'm going to talk about the consistency point, that how it is important and how you can actually achieve it. कुछ सालों पहले जब मैं अपना जिम रूटीन कंटिन्यू नहीं कर पाता था तो मैं यूट्यूब खोलता था और मोटिवेशनल वीडियोस को देखता था. उन वीडियोस को देख के मुझे बहुत पंप फील होता था. आई यूज टू फील द रियल zeal, the real fire inside me to make me wake up and go to gym and work really hard. बट कुछ दिनों बाद मुझे वो फीलिंग फेड अवे हो जाती थी जब तक नेक्स्ट टाइम मैं फिर सेम सिचुएशन में पहुंचता और मैं फिर से स्टार्ट करता था. बट इस टोटल सभी प्रोसेस में समवेयर आई यूज्ड टू फील डिसअपॉइंटेड कि मैं उन सभी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि रिजल्ट्स तभी आएंगे जब मैं उनको कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करूँगा. इनफैक्ट मैं उसी फिर साइक्लिक फीलिंग से पास कर रहा था आज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूं वो एक अपलिफ्टिंग थॉट जो मेरे ब्रेन में हमेशा डेवलप होती है और जो मुझे पुश करती है टू स्टार्ट अगेन. एज वी हैव ऑलवेज रेड अराउंड दैट लूजिंग समथिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फॉलिंग, बट द रियल विक्ट्री लाइज इन स्टैंडिंग व्हेन यू हैव फॉलन डाउन. Over the time I have realized and I have made a thought for myself that getting out of routine is in fact the part of routine. If you are someone who wanted to be in a gym routine, अगर आप वो पर्सन है जो चाहते हैं कि आप एक गुड वर्कआउट रिजीम, एक गुड डाइट प्लान में फिट इन हो जाएं, तो उस वर्कआउट से ड्रिफ्ट होना, उससे बाहर आना, उस एक वर्कआउट रिजीम का पार्ट है. और अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं और आपकी कंस्ट्रेंट सच में सीरियस हैं जो आपको नहीं आने दे रही अपने रूटीन में, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स जब आप एक थोड़ा टाइम अपने रूटीन से बाहर स्पेंड करते हैं, ये एक आपको एक नया ड्राइविंग फोर्स देता है दोबारा से स्टार्ट करने और हिट बैक करने के लिए. एवरी ईयर जब मैं जिम में देखता हूँ कि जनवरी में वी सी अ लॉट मैनी पीपल जो जिम आते हैं, बट वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. वो
एक महीना हद मार के अपने आप को पुश करके करते, आफ्टर दैट दे स्टॉप. So I want to share with all those peoples that this is a cyclic relationship between motivation and action. Generally हम लोग start करते हैं अपनी this cyclic process from motivation. We seek motivation from something, some YouTube video, something which can push us and make us to take an action. But generally होता क्या है कि that motivation एक टाइम के बाद हमको used to लगने लगता है और फिर हम अपने उस हैबिट को छोड़ देते हैं. आपसे कुछ सालों पहले, 2-3 सालों पहले मैं भी ऐसा ही करता था. मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखता था. मैं मसल ब्लेज की एडवर्टाइजमेंट्स देखता था जिसमें दे टॉक अबाउट तुम नहीं समझोगे टैगलाइन, वेयर दे यूज्ड टू मेंशन द फायर विच पीपल हैव इनसाइड देम टू मेक देम वर्क आउट. मैं देखता था कि हाउ पीपल आर वर्किंग आउट सो सीरियसली. वो मुझे बूस्ट करता था और मैं एक्शन लेता था. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एक फायर धीरे धीरे बुझ जाता था. फिर मैंने अपने कुछ मेंटर्स को फॉलो करना चालू किया जिन्होंने स्पेशली कंसिस्टेंसी पे काफ़ी काम किया है. जिन मेंटर्स को मैंने फॉलो किया उन्होंने मुझे हमेशा एक बात काफ़ी अच्छे से सिखाई, दैट in this cycle of motivation, action, then doing no efforts, and then again seeking motivation and then taking action is a wrong way to go. If you ever want to bring in consistency, you need to begin this cycle with efforts. आपको आपकी monotonous feelings, आपकी वो feelings जो आपको feel कराती है you are used to doing gym, और जो आपको ड्रिफ्ट करती है जिम छोड़ने से या वर्कआउट करने से या डाइट प्लान फॉलो करने से, you need to just ignore those feelings for a while and take action. The action which you take, irrespective of any motivation you have ever sought from outside, is actually the best source of motivation you can ever take. आप पहले action ले, because you have a part which in your brain which is analytic and which understands what's wrong, which is not making you consistent. So what you actually need to do is execute and take action, and then see and review it, look back at it, and then analyze that no matter how difficult situations were, you get through it. आपने इसको पास किया और आपने next step लिया to execute that thing. This gives you a really strong motivation, और ये आपको एक ऐसा belief देता है that you need no outside support, no push so as to execute things. तो मैं आप लोगों को यही recommend करना चाहूँगा कि sometimes you need not require a push from outside, rather a push from inside, which is something coming out of the least of your thought process, so that at least once you execute it, after some time you realize that you did it no matter what, and then it becomes a source of motivation and then it pushes you further. और इस जर्नी में जब आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है तो दिस इज समथिंग विच इज अ विन विन सिचुएशन. ये आपको रियलाइज कराता है दैट दिस साइक्लिक प्रोसेस इज एक्चुअली यील्डिंग यू रिजल्ट्स. रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस वन सिंगल कंसेप्ट जो मैंने एक सीखा. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड अ सेमिनार वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ द हैबिट्स वर्क, and I just wanted to link it with my goals so that I actually can bring all those actions into my habit which I am very sure will yield me results. Friends, हमारे जो ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेप्स में हुई है. आई डोंट नो आपको ये कितना रिलेटिव लगेगा रिगार्डिंग आवर सब्जेक्ट, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस अंडरस्टैंडिंग इनटू योर बिलीफ सिस्टम. आप अपने दिमाग में इस चीज़ को जितना सेट करोगे ये आपको उतना ही हेल्प करेगा टू कंट्रोल योर माइंड सेट एंड देन टेक एक्शंस. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस. आवर ब्रेन हैज़ बीन डेवलप्ड into 3 main stages from our very beginning and through the whole course of evolution to the present day. Those 3 stages are the development of our brain from a reptilian brain to a mammalian brain, and then having an analytic part built up inside our brain known as neocortex. This is something very deep related to those people who actually work on how to frame habits and how our brain responds to it. So this reptilian brain, the most primitive part of our brain, which came from the animals when we used to be into the family of reptilians, is something which is the animal of our brain. It is something which runs on a principle of pleasure and pain. Your brain rushes towards the pleasure, and everything which is pain into your brain makes you rush away from it.
It has no logic working. It is purely run on a driving force, and that driving force is controlled by pleasure and pain. See, the definition of pleasure and pain in this concept purely depends on how we perceive things. For a person who is making maximum pain into its muscle, actually generates a signal of a pleasure into his mind. So for him, actually, it's a pleasure to create micro injuries in his muscles is actually a feeling of pleasure in his brain. To not being able to go to gym actually generates a feeling of pain in his brain. So that's how this reptilian brain works. It is till date the strongest part of our brain that pushes us to get our results. After that, over the time when we got developed into mammals, we started we started possessing the ability to store the information that came to us through experiences. जो जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमने धीरे धीरे उसको अपनी मेमोरी में बैठाना चालू किया, और उसने हमें एक चीज़ सिखाई कि जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर कर लेते हैं और हमको एक एबिलिटी मिलती है कि हम उसको रेफर बैक करके दोबारा से देख सकें और उस बेसिस पे अपने फ्यूचर डिसीजन ले सकें, हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप ओपन हो गया, जिससे हमने अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दोबारा से कैलिब्रेट किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. So mammalian brain is actually the storage part of your brain which help you to go back and refer to your past memories, analyze them, bring them to thought process, come to a conclusion, and then take your future decisions. This is just a reference type of brain. It is not a driving force. Neither does it possess the analytic abilities like the third stage of our brain, which was actually the development of neocortex. Neocortex हमारे ब्रेन की सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें हमने ये पाया कि हमारे ब्रेन के अंदर एक एनालिटिक पार्ट है जो हमको सही गलत हमेशा बताता है. We always are aware that we are doing something wrong or something right. It is something which tells us this thing is justified, this thing is wrong. But this is just a kind of alarming system. It never controls your actions. A thief still will keep doing his job while he is aware that he is doing something wrong. So the main part is that neocortex is that justification system of your brain which tells you about right and wrong, but the actual source of push, the actual source of driving force which comes out of your brain is your reptilian brain. So this whole process of bringing good habits into action is actually surrounded around bringing pleasure to your reptilian brain about what you actually want to execute. Your neocortex tells what is the action which is really right for you to get results. That is the most intelligent part. That is your part of brain that can give the best answers to all your queries. All you need is just to relax and listen to it. जब फ्रेंड्स आप इस पार्ट को समझने लगते हैं तो आपका सिंपल सा एक काम होता है. You just have to bring all those activities as a pleasure. You need not to take care of anything because then your reptilian brain is automatically ready to rush towards it. That's what I always do. I always make sure कि जो habits मैं cultivate करना चाहता हूँ, I sometimes link a catch point to that which actually pushes me towards that catch point, और उसी वेग में मैं बाकी सभी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता हूँ. और सिंस ये सारी चीज़ें जब मुझे ऑलरेडी ले जाती हैं एक्शंस करने के लिए, तो इन द एंड आई ऑब्जर्व दैट आई एग्जीक्यूटेड समथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल एड. नाउ द मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम दिस स्टेज, एंड दैट मोटिवेशन रियली गिव्स यू विजडम एंड दैट मेक्स यू फॉल इनटू द साइकिल ऑफ कंसिस्टेंसी. जैसा कि मैं अपना जिम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई सेड नॉट सो FitTuber Rahul. I'm very sure I will be able to bring it into consistency. All I need to is bring some exciting part. So I thought of, what if I'm not being able to continue my gym in the evening? I have a curfew at night and all my gyms close early, and I'm not being able to join the gym. There is no harm in that. I still can continue my gymming. And the best way is I just make sure I sleep on time. I make sure my meals for the morning are partially ready. I do that in the night, and I sleep on time so that I can wake up early. I know it will be little difficult for initial few days, but once I go through that action process,
those actions will give me motivation. And that's why I decided to start my gym from the early morning. It has started to be really cold, but still, what if I do some push-ups and make my body warm and then go to gym? That can still help me out. So that's how I framed my brain, and I thought I should also share the same process if you are not being able to do the things your own way. हम सभी को कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं अपना जिम कंटिन्यू कर पाने में या अपना डाइट प्लान फॉलो कर पाने में. बट इफ वी अटैच अ कैच पॉइंट टू इट, द प्रोसेस बिकम्स रियली ईजी. तो यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था. All you actually need to bring your wishes, to bring those actions which your analytic brain knows are good to yield you results, all you need to do is make a little catch point to it, make something which makes your brain feel that it actually is a pleasure, link something to it, so that every time you get attracted towards it and no matter what you execute it. That's all for it today, guys. Apart from product reviews, what I feel these things are really core, and I personally believe I should keep sharing such informations. Maybe they will help you someday. I will be back again with certain video, but I'll be back with more energy and some really good value to you guys. Thanks for watching. See you in my next video. This is your not so fit tuber Rahul. Take care.